Hey guys, welcome back to my channel. I am Harsiddhi Chavda, and as the title suggests, I am doing a thrift flip or DIY sort of a video. Now I already have done this kind of a video, so if you haven't watched that video, then please go and check that out. I will mention link somewhere here. So in that video, I have converted like एक लंबा सा बड़ा सा oversized dress को I have converted into like a skirt and crop top, and वो बहुत अच्छा रहा था, तो that gave me so much confidence. So I thought let me just do this kind of a video more. So in today's video, I am going to convert. Let me just wait. So I'm going to convert this top into like a fancy puffy sleeve top which is in a very trend. ये टॉप मेरे पास कब से ही है, मुझे ऐसा था कि मैं ये टॉप को मैक्सिमम यूटिलाइज करूंगी, बट आई गेस मैंने इसको एक ही बार पहना है, तो आई थॉट कि लेट मी जस्ट कन्वर्ट दिस टॉप इनटू समथिंग रियली फैंसी. एंड ये टॉप बहुत ही ज्यादा ओवर साइज है, तो मैंने सोचा था कि इसको थोड़ा सा स्टिच करवा के मैं अपनी साइज का करवा दूंगी, बट आई हैवंट डन दैट. तो आई थॉट कि लेट मी जस्ट मेक समथिंग रियली लाइक अ useful thing. So yeah, in today's video I am going to convert this top into a puffy sleeve, and इसके पीछे बहुत ही अच्छे buttons भी है, and it also has a shoulder padding. So I am going to remove this sleeve first, and मैं shoulder padding को भी remove कर दूंगी because I can use this shoulder padding in some other like this kind of a video thrift flip वाले में. एंड अगर ये सक्सेसफुली हो जाएगा देन आई एम गोइंग टू डू दिस काइंड ऑफ अ वीडियो मोर ऑफन, एंड मेरे पापा के सारे शर्ट को मैं फैंसी पफी स्लीव टॉप में कन्वर्ट कर दूंगी बिकॉज पफी स्लीव आर इन वेरी ट्रेंड एंड इट लुक्स सो मच फैंसी एंड फेमिनन एंड आई रियली लाइक. सो या नाउ विदाउट ब्लेबरिंग मच, लेट्स जंप इनटू द वीडियो. Okay guys, so this is my top, and first thing I am going to do is I am going to remove shoulder pads. So this is my shoulder pad. Okay, so now that I have removed the shoulder pad, now I'm going to do is I'm using this top so as a reference. So मैं इसको trace करूँगी क्योंकि this is the only top जो ऐसा fitting में है मेरा. So yeah, and now that I have a chalk, so मैं उसको measure करूँगी. So this is going to become my square neckline. यहाँ पे ऐसा होगा, and from here I'm using this to dress. So and मैं थोड़ा सा ज्यादा चॉप कर रही हूँ, इसको थोड़ा सा ज्यादा लूंगी so that if in any case अगर मैं थोड़ा सा मिस्टेक करूँ तो I can like fix that. Yeah, that is the aim. Okay guys, so now that we have left with these two pieces, this is the back portion. Maybe I can convert this as a front portion because I really like that button situation, and this is the front portion. So now I'm going to stitch this two part, and this is very long, so I'm going to convert into a crop style, and then I will attach the sleeve and make it as a puffy sleeve. So yeah, that is the situation as of now. So yeah, let's just hope कि मैं कुछ कर पाऊँ. Okay, after chopping excess fabric, now I am using pins to attach the fabric. So मैं जब भी stitch करूँ तो मेरा stitching एक same direction में जाए. Okay guys, so far this is the situation of my top. So I am going to convert this top into like crop top style. So ऊपर का portion है उसको भी मैं hem stitch कर दूंगी, and after that I will attach the sleeve which will convert into a puffy sleeve. So far it took me 2 hours to do this. Okay, so now let's just start to like hem portion, and then I will attach the sleeve part. Yeah. Okay guys, so far this is the progress. So right now it is looks like a tube top, and मैंने ये place mark कर दिया using this pin. So now what I'm going to do, using this
scale going to cut because I want to convert this top into like a crop top. So मैं Okay, here I am using iron to press this fabric because that way it will be easy for me to like stitch. Because अगर मैं पिंस यूज़ करूँगी तो वो एक सेम डायरेक्शन में मेरा स्टिच नहीं जाएगा, बट बिकॉज आई एम आयनिंग तो वो अच्छे से मटेरियल मेरा फैब्रिक फोल्ड हो जाता है, तो दैट वे इट इज़ ईजी फॉर मी टू स्टिच. ओके गाइस, सो नाउ दैट आई हैव आयरन, तो ये हेम अच्छे से एकदम फिनिशिंग टच उसका अच्छा लग रहा है. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टिच दैट पार्ट. सो या लेट्स स्टार्ट. सो बहुत ज़्यादा लाइक आई विल टेक स्टिच एट अ वेरी फार डिस्टेंस फॉर दिस. ओके गाइस, कैन यू सी दिस इज द स्टिच. मैंने फर्स्ट आयरन से उसको प्रेस किया, देन आई टुक द स्टिच. बड़े बड़े स्टिच लिए हैं एंड आगे से एकदम छोटे लिए हैं. सो इट लुक सो लाइक फिनिशिंग टच अच्छा दिख रहा है. इवन मैंने हाथ से भी किया है स्टिच फिर भी. सो सेम थिंग आई एम गोइंग टू डू इन दिस पार्ट. एंड यहाँ पे अभी मैं स्टिच लूंगी एंड या लेट्स स्टार्ट. Okay guys, so this is the top and this is my sleeve. So what I am going to do is कि this portion I am going to attach, ये जो sleeve का ये वाला portion है यहाँ से, और ये top का ये वाला portion. So I am going to attach and this is the elastic. So I want like a puffy sleeve. So मैं क्या करूँगी कि इसको मैं 1 सेंटीमीटर जितना ऐसे ही पहले स्टिच कर लूँगी एंड यहाँ से थोड़ा सा I will like थोड़ा सा मैं जगह छोड़ दूँगी. So विद सेफ्टी पिन और उसकी हेल्प से आए देन ये इलास्टिक को मैं एंटर करूंगी एंड ये हो जाएगा अपना स्लीव परफेक्ट. ये साइड पे मैंने ऑलरेडी एक स्लीव कर दिया है. एज यू कैन सी दिस इज व्हाट्स राइट नाउ स्लीव लुक्स लाइक. ऐसे थोड़ा पफीनेस हुआ है, आई डोंट नो, अभी मैं ट्राई करूंगी तब पता चलेगा दोनों स्लीव से. एंड यहाँ पे जब इलास्टिक एकदम अच्छे से सिक्योर करना है दोनों साइड पे एंड या जैसे यहाँ से एंटर होके एज यू कैन सी. सो this is same thing I am going to do on this side. ये मैंने पहले इसलिए कर दिया था so that I can able to explain easily. But I hope I can able to explain you easily. So now I am going to attach this sleeve portion with this. So yeah, let's start. Okay guys, the top is ready. Yay! In my world, I don't worry, darling. I just smile, 'cause you're by my side. And now your eyes open up every morning to the love that shines in mine.
and I see it in yours too. So now I sing to you. And when you go and leave me here all alone, I'll be waiting, we can make it, because I know that after all this time, you'll read between these lines. Final look of this top, and I really like this top a lot, and it looks very feminine, girly, and last time से better ये वाला top बना है, because last time मैंने जो वो skirt and top crop top बनाया था उसका finishing इतना अच्छा नहीं था, but this time I did like a good with the finishing. So I really like this top a lot, and I hope I can able to inspire some of you to do this kind of a DIY, because it is very easy to do and I don't have a machine, so मैंने hand stitch से किया है, so I guess anyone can do this. So yeah, that is it for this video, and if you enjoy watching my video, then please like, share and subscribe to my channel, and for more life update and behind the scene you can also follow me on Instagram. Till then, eat healthy, take care and bye.